Hello students. So in the previous video we started with a new chapter, arithmetic progression, and I gave you a formula. The formula was Tn equals a plus n minus 1 d. You have to learn this formula, very important formula for the chapter. Here a stands for the first term. A means the first term of the AP. What is AP? AP is arithmetic progression. Okay. D stands for the common difference. Common difference. Okay. N is the term which you want to find. Okay. Term to be found, or you can say it is the last term. Okay, and Tn is the value of that term. Okay, for example, if I say find the 15th term. Okay, so find the 15th term means n will be 15. Okay, and let's say that value of the 15th term is 309. So this 309 is Tn. Okay, Tn means it is T15. Okay, so in the place of n, I will write 15. T15 means the value of 15th term. Okay, the value of 15th term is 309. Okay, and this 15 is nothing but n. जो टर्म आपको ढूंढना है, फाइंड करना है, उस टर्म को हम n लेते हैं. ठीक है, और उसकी वैल्यू को Tn क्या होता है? वैल्यू ऑफ द टर्म. ओके, तो वी हैड कंप्लीटेड the second, third, fourth and fifth sum from the concise exercise. Now let's do the second, third, fourth and fifth sum. Let's do the sixth sum now. Sixth sum says find the 100th term of the sequence. We have to find the 100th term of the sequence, and the sequence is root 3, 2 root 3, 3 root 3 and so on. Okay, so this is the sequence: root 3, 2 root 3, 3 root 3, and we have to find the 100th term. Okay, so I know this is the formula. Tn is a plus n minus 1 into d. So a means the first term. So in this case the first term is root 3, correct? D is the common difference. And how to find the common difference? I told you last time, common difference you can find by second term minus the first term. Subtract the second term minus the first term. Okay, second term minus first term. So what is the second term here? 2 root 3 minus what is the first term? Root 3. So 2 root 3 minus root 3 means this is 1 root 3. So 2 minus 1 क्या होता है? 1 root 3. Okay, 2 root 3 minus root 3 होता है 1 root 3. Okay, और यहाँ पे देख के भी समझ सकता है डायरेक्टली कि रूट 3 है, नेक्स्ट 2 रूट 3 है, फिर 3 रूट 3 है, मतलब रूट 3 बढ़ते जा रहा है. करेक्ट. सो डिफरेंस इज रूट 3. करेक्ट. वी हैव टू फाइंड विच टर्म? 100th टर्म. दैट मीन्स n विल बी 100. करेक्ट. सो आई विल फर्स्ट राइट द फॉर्मूला. Tn इज a plus n minus 1d. Okay, and this Tn will become T100 because I am finding the 100th term. A is root 3, n is 100, so 100 minus 1 and difference is root 3. Okay, so root 3 plus 100 minus 1 is 99 root 3. So root 3 plus 99 root 3 is 100 root 3. Okay, so my 100th term is 100 root 3. This is my answer. I hope you have understood. Else just rewind for 2 minutes and see the sum once again. As we keep on doing new sums, you will understand it better. The formula, the application of the formula. Copy it.
the seventh sum. The seventh sum says find the 50th term. Find the 50th term. Okay. The sequence is 1 upon n, n plus 1 upon n, 2n plus 1 upon n, and so on. Okay. See, there are no numbers here. Doesn't matter. We will follow the same rule. Okay. This is the first term, second term, third term. Correct. So a is the first term. First term is 1 upon n. D is the difference. Difference means second term minus the first term. So second term is n plus 1n minus the first term is 1 upon n. See, अब ये सम में इजीली देख के समझ में नहीं आ रहा था कि डिफरेंस क्या है. करेक्ट. सी, अगर जो AP है वो अगर ऐसा हो 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे समझ जाएगा कि डिफरेंस क्या है. 3 का डिफरेंस है तो इजीली आप D की वैल्यू को 3 लिख सकते हो. लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स है तो देख के समझ में नहीं आएगा इनके बीच में डिफरेंस क्या है. तो इस टाइम पे यू हैव टू रिमेंबर दैट कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता है. सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म. सो सेकेंड टर्म क्या था, n प्लस 1 अपॉन n माइनस फर्स्ट टर्म क्या था, 1 अपॉन n. ओके. सो यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू टेक एलसीएम. n इज कॉमन इन द बेस. सो n प्लस 1 माइनस 1, 1 will get cancelled. Correct. So what will remain? N upon n. What is n upon n? It is 1. So difference क्या मिला मुझे? Common difference is 1. Okay, समझ गया? See, a की value 1 upon n है. Common difference is 1. And now I'll apply the formula. और n क्या है? We have to find the 50th term. So n is 50. Okay. Now Tn. Tn is a plus n minus, sorry, I'll do it here. Tn is a plus n minus 1 into d. We have to find the 50th term. n is 50. So I'll write T50. See, n यहाँ पे भी है और n छोटा सा यहाँ पे भी है. तो इस छोटे n की जगह पे भी हमें लिखना है 50. ओके. 50 इस पूरे की वैल्यू नहीं है. 50 सिर्फ n की वैल्यू है. n. ओके. सो डोंट मेक द मिस्टेक. T50 इज a क्या है, 1 अपॉन n प्लस n minus 1 means, sorry, n minus 1 means 50 minus 1 and difference is 1. So T50 equals 1 upon n plus 50 minus 1 is 49. 49 into 1 is 49 only. So that's it. This is the answer. Okay. Copy the sum. Next sum. Now next sum is important. I'll copy the question also here because I want you to understand this sum properly. Is 402 a term of the sequence? And the sequence is so they are asking, the question is, understand the question properly, ध्यान से सुनना. Is 402 a term of the sequence? मतलब वो पूछ रहे हैं, they are asking us that 40, ऐसा नहीं बोला है कि find the 402 term of the sequence, ऐसा नहीं बोला है. ठीक है, this is wrong.
इज 402 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब अगर ये सीक्वेंस को मैं आगे लिखते जाऊँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 402 इसका एक टर्म है कि नहीं है, ये क्वेश्चन है. करेक्ट. मतलब इस टर्म इन दिस सीक्वेंस इज देयर अ वैल्यू कॉल्ड 402. करेक्ट. बिकॉज सारे नंबर्स तो नहीं होते सीक्वेंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 है, डायरेक्ट 13 है, 13 के बाद डायरेक्ट 18 है, तो 17 तो इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, 16 भी इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, 15 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 13 के बाद सीधा 18 आ रहा है, उसके बाद सीधा 23 आ रहा है. तो ऐसा वो पूछ रहे हैं कि आगे जाके क्या 402 आएगा इस सीक्वेंस का पार्ट. ओके, सो दे आर आस्किंग अस दैट इट इज 402 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. इज 402 पॉसिबल हियर? सो कैसे करें फाइंड? सी, तो लेट्स अज्यूम दैट 402 इज अ नंबर. ओके, अगर 402 एक नंबर है इस सीक्वेंस में, तो 402 एक वैल्यू हुई. इस सीक्वेंस में 402 एक वैल्यू है, तो इस टर्म के वैल्यू को वी विल टेक 402. ओके, एंड हम ये फाइंड करते हैं. द फर्स्ट टर्म इज 8 एंड द डिफरेंस इज 13 minus 8. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 minus 8, डिफरेंस इज 5. अब मैंने क्या बोला कि लेट्स अज्यूम 402 टर्म है इस सीक्वेंस का, तो हम ये ढूंढ लेते हैं कि वो कौन सा टर्म है. सी, 402 इस सीक्वेंस में कहीं ना कहीं 402 आया. ओके, अब ये कौन सा टर्म है? क्या ये 10th टर्म है, 15th टर्म है, 14th, 17th, 18th, 19th, कौन सा टर्म है ये? आई डोंट नो विच टर्म इट इज, सो आई विल फाइंड. ओके, तो n, वी विल फाइंड n. ओके, मुझे पता है कि 402 एक टर्म है, a पता है, d पता है, एंड वील फाइंड द वैल्यू ऑफ n कि ये कौन सा टर्म है. ओके, सो लेट्स ट्राई दिस. सो 402 minus 8. ओके, सो n minus 1 into 5. ये 8 को मैं यहाँ पे लेके आया, सो दिस बिकेम 402 minus 8, दैट इज 394 equals n minus 1 into 5. Now this n, you can even open the brackets or you can divide this 5 directly. So you will get or you can do like this also. See, many people do it like this, 349, open the bracket. So this will become 5n minus 5 and this minus 5 will come here. So 394 plus 5 is equals to 5n. 394 plus 5 is 399 is equals to 5n, and so 399 upon 5 is equals to n. ऐसा भी कर सकते हैं, या you can now bring this 394 upon 5, this minus 1 will come here and become plus 1. ओके, मैं दोनों मेथड्स बता रहा हूँ. सो अब इसका LCM लेंगे तो दिस विल बिकम 394 plus 5 upon 5. सो ये भी बन गया 399 upon 5. ओके, सो विच एवर यू फाइंड इट ईजी यू कैन डू दैट. n क्या मिला? 399 upon 5. ओके, तो इसका अगर मैं डेसिमल में वैल्यू फाइंड करूँ 399 upon 5, तो आई विल गेट 79.8. ओके, 79.8 n की वैल्यू. n की वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं हो सकती. n कैनॉट बी इन डेसिमल. वाई इट कैनॉट बी इन डेसिमल? बिकॉज सी, if I ask you to find a term, I will say find the 10th term, find the 11th term. I cannot say that find the 10.5th term. ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं होता. ओके, टर्म जो होते हैं वो होल नंबर्स में होते हैं. करेक्ट. सो 10th टर्म, 11th टर्म, तो n की वैल्यू इज ऑलवेज अ होल नंबर. ओके, इनफैक्ट आई कैन से n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर बिकॉज जीरो भी नहीं आएगा उसमें. ओके, तो इट इज़ अ परफेक्ट नंबर. इट इज़ नेवर इन डेसिमल. तो अगर आपको n की वैल्यू डेसिमल में आई है, इसका मतलब इट मीन्स दैट 402 इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है. अगर इस सीक्वेंस का पार्ट होता तो n की वैल्यू प्रॉपर आती. ओके, सो इससे पता चला कि n इज इन डेसिमल मीन्स 402 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस. ओके, और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताता हूँ. मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ. ठीक है, ये तो बात हो गया है, बट और अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट इफ यू वांट यू कैन कॉपी द क्वेश्चन, कॉपी द सोल्यूशन. या तो ये कोई भी एक पार्ट कॉपी करो. फाइनली n ये मिला.
ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ. अगर ये 402 नहीं होता, ये 403 पूछा होता. ओके, 403 पूछा होता तो क्या होता. सी, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. करेक्ट. Tn की जगह पे आई वुड हैव पुट 403 इज इक्वल्स टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 5. करेक्ट. मैंने पर्पसली आई हैव चेंज द क्वेश्चन. 402 से मैंने 403 किया है. क्या फ़र्क होगा देखना. 8 will get subtracted, so 403 minus 8 is n minus 1 into 5. So 403 minus 8 is 395. Okay, n minus 1 into 5. अब ये 5 यहाँ पे डिवाइड होगा. So 395 divide by 5. n minus 1. This 395 divided by 5 is 79 is equals to n minus 1. This minus 1 will come here. So 79 plus 1 is n. तो n क्या मिला, 80. एक प्रॉपर वैल्यू मिली, n is 80. मीन्स ये जो 403 है ना, दिस इज द 80th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. करेक्ट. सो ये 403 एक टर्म था प्रॉपर, इसीलिए हमें n की वैल्यू प्रॉपर मिली 80th टर्म. बट 402 टर्म नहीं था, इसीलिए n की वैल्यू क्या मिली, ऐसे डेसिमल में मिली. ओके, सो व्हेनेवर यू गेट द वैल्यू इन डेसिमल, दैट मीन्स द नंबर विच यू हैव टेकन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सीक्वेंस. यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट द 402 is not a part of this sequence, because by taking 402 we got the value of n in decimal. Okay, so this was something extra which I told you, that by taking 403 I got the value of n proper as 80. That means this is the part of a sequence, but 402 is not a part of a sequence. Okay, so not to complicate it further, just remember simple thing. If you want to check whether a number is part of a sequence, put the number here and see. If you are getting the n value of n in decimal, that means that number is not a part. If you are getting the value of n proper, that means it is a part of a sequence. Okay, as simple as that. Next sum. Find the common difference and the 99th term. We have to find the 99th term of the sequence. And the sequence is, now in this question there is a printing mistake. Okay, the first number in many textbooks is given as 7, but the first number is not 7. See, just make this correction in your notebooks. This first number they have given as 7, then there is some empty space here, and then the next number is 9 1 upon 2, and then this number is missing in the textbook, in many textbooks. So this should be 7 3 upon 4. The question is 7 3 upon 4, comma 9 1 upon 2, comma 11 1 upon 4, and so on. This is the sequence. So make this correction if you do not have it in your textbook. Now we have to find, in this question we have to find the 99th term and the common difference also. Okay, so first A is the first term. So the first term is 7 3 upon 4. Let's convert into proper fraction. So this is 7 4s are 28 plus 3, 31 upon 4. Okay, the difference, how to find the difference? Second term minus the first term. So the second term is second term minus the first term. So second term is 9 1 upon 2 minus the first term is 7 3 upon 4. 9 2s are 18, 18 plus 1,
19/2 minus 31/4. So to take the LCM, I will multiply it with 2. So this will become 38/4 minus 31/4. So 38/4 minus 31/4 is 7/4. So in this question the difference is 7/4. Okay, the value of A is 31/4 and the difference is 7/4, and we have to find the 99th term. 99th term means n is 99. Okay, so let's substitute the values. Tn equals A plus n minus 1 D. So Tn means T99. We are going to find the 99th term. A is 31/4 plus 99 minus 1. See, n is 99 and difference is 7/4. I will remove this page now. Okay, so 31/4 plus 99 minus 1 is 98 into 7/4. 98 into 7. 98 into 7 is 686. So you can even cancel this number, but don't do that because if the denominators are same, then there is no need to take LCM. So keep this 4 only. 98 into 7 will give you 686/4. So 4 common. 31 plus 686. What is 31 plus 686? It is 717/4. And if you convert this into mixed fraction, this becomes 719/1/4. Okay, those who do not know how to convert into mixed fraction, pay attention here. Divide the numbers like this. So 4 1s are 4, 31, 4 7s are 28, 37, then 4 9s are 36. Remainder is 1. So remainder becomes the numerator, quotient comes at the side, and this number denominator remains the same. Okay, so answer, the 99th term is 179/1/4. Copy the sum. It starts from here actually. First copy this part. Pause the video and copy it down. And then copy this part. Next sum. Question number 10. In question number 10, we have to find how many terms. How many terms are there in the series? How many terms means you have to find the number of terms. Correct. How many terms means you have to find number of terms, and number of terms is n. Okay. So now understand, the question given here is 4, 7, 10, 13. The sequence is 4, 7, 10, 13 till 148. Okay, this is the sequence till 148. And they are asking us to find how many terms are there in this sequence. Okay, जैसे ये first, second, third, fourth, मतलब और कितने terms होंगे और ये है last term. Correct. So we have to find which term. How many terms are there in this sequence? How many terms ढूंढना, या हम ये ढूंढ ले अगर कि ये वाला टर्म कौन सा है, ये जो 148 है ये कौन सा टर्म है. अगर 148 समझो 42nd टर्म है फॉर एग्जांपल, तो मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस? 42 टर्म्स है, बिकॉज ये लास्ट टर्म है. जो भी इसका नंबर होगा उतने ही टर्म्स है इसके अंदर. करेक्ट.
सो कहने का मतलब है कि दिस इज द लास्ट टर्म, करेक्ट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म. सो इफ आई कम टू नो कि ये टर्म कौन सा है, ये टर्म 50th टर्म है या 55th टर्म है, 56th टर्म है, अगर वो पता चल जाएगा, इफ आई come to know that which term is this, I can easily say how many terms are there in this sequence. So करना क्या है, very easy, a plus n minus 1d is tn, correct. We will find which term is this. So this term 148, will find which term is 148. That means the value 148 will come here, okay, and we will find which term is this, means we will find n, okay. So a is 4, first term is 4, and d difference. What is the difference you can see here? Second term minus first term, 7 minus 4 is 3. ओके, so समझ में आ रहा है. 148 एक वैल्यू है, सीक्वेंस की एक टर्म की वैल्यू है, तो इसीलिए वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज वैल्यू, ओके. एंड वी आर फाइंडिंग कि ये कौन से टर्म है, ये 148 इज विच टर्म, ओके. सो दैट विच टर्म मीन्स इट इज n, ओके. सो नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली इज n. सो 148, this 4 will come here, minus 4 is equals, इसको ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, so 3n minus 3. 144 minus 4 is 148 minus 4 is 144. This 3 will come here. 144 plus 3 is 3n. 147 is 3n. So 147 upon 3 is 49. This is 49. That means n is 49. Means this term 148 is the 49th term. Correct. So 148 is 49th term. Therefore, there are 49 terms in this sequence. Okay, so we are writing the final statement. Therefore, there are 49 terms in this sequence. Correct ना? हमने find कर लिया 148 is the 49th term of this sequence. Okay, sequence. You understand what is sequence? So that means 49 terms है total इस sequence के अंदर, क्योंकि जो last term है उसकी value है 49. Okay. So वापस एक बार बताता हूँ. Tn को याद रखना. Tn is what? वैल्यू ऑफ द टर्म, ओके. और ऐसा भी कह सकते हैं कि Tn इज द लास्ट टर्म, ठीक है. जो भी लास्ट टर्म होता है उसको Tn की जगह पे पुट कर देते हैं, ठीक है. एंड n क्या होता है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, ओके. आप कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हो, विच नंबर आर यू ट्राइंग टू फाइंड, दैट इज n, ओके. कॉपी दिस सम. Now the sub question 2 and sub question 3, this was sub question 1 of question number 10. Sub question 2 and 3 are same, exactly same. The series is 0.5, 0.53, 0.56 till 1.1. ये सीक्वेंस है एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी टर्म्स. तो सेम थिंग, फर्स्ट ए क्या होगा 0.5. व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म. सो 0.53 माइनस 0.5. डोंट मेक मिस्टेक्स इन सबट्रैक्शन. सी 0.53 माइनस 0.5 क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 0. सो 3 माइनस 0 इज 3, 5 माइनस 5 इज 0.0. आंसर इज 0.03. Okay, so difference is 0.03 and 1.1 is the last term. Okay, so Tn is a plus n minus 1d, correct. We have to find n in this question. How many terms? N. And Tn की जगह पे I'll write this last term. Okay, so 1.1 equals 0.5. A is 0.5 plus n minus 1, d is 0.03. Okay,
So this 0.5 will come here. 1.1 minus 0.5 equals, I can open this bracket, or let's open the bracket. So 0.03n minus 0.03. 1.1 minus 0.5 is 0.6. This minus 0.03, if comes on the left hand side, will become plus 0.03 equals 0.03 n. 0.6 plus 0.03, इसमें भी मिस्टेक मत करना. 0.6 plus 0.03. So यहाँ पे क्या होगा? 0. 0 plus 3 is 3. 6 plus 0 is 6 plus, so it is 0.63. Students make it 0.9. That is wrong. This is 0.63 equals 0.03 n. Up 0.03 will get divided here. So n. डेसिमल हटा देंगे. So this will become 63/3. ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से. So this will become 63/3. That means n will be 21. So there are how many terms in this sequence? Write a statement. There are 21 terms in this sequence. Okay, there are 21 terms in this sequence. Write this final statement. I hope you have understood this sum. Now the next sum, I leave the next sum for you to solve, the third one. Okay, it is exactly same. You have to take the last term as Tn. Here A and D you will get it from the sequence. Pause the video and solve this third sum and check your answer. Okay, and then proceed. I've copied the question on purpose to explain you. They are asking us which term of the AP is 1 plus 4 plus 7 plus 10 is 52. First of all, they have given the question like this: 1 plus 4 plus 7 plus 10. What is the use of this plus sign? See, understand. This plus sign does not mean 7 plus 10 17 or 4 plus 7 11 like this. We don't have to add. They will not give you commas on purpose. ये प्लस साइन क्या है? सिर्फ इस नंबर की साइन है. ये जो प्लस है सिर्फ इस नंबर की साइन है. एक्चुअल में सीक्वेंस क्या है? 1, प्लस 4, प्लस 7, प्लस 10, ऐसा ये सीक्वेंस है. डॉट 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 ये आगे तक जाएगा. ओके, और ये मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए दे हैव गिवन इट लाइक दिस: 1 plus 4 plus 7 plus 10. सो यू हैव टू इग्नोर दिस एंड यू हैव टू जस्ट ऐड कॉमास हियर कि एक्चुअल में क्या है. दिस इज 1 4 7 10, वही है ये. ओके, सो दिस इज 1 4 7 10 डॉट डॉट, एंड दे आर आस्किंग यू दैट विच टर्म इज दिस 52. 52 कौन सा टर्म है? ओके, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड n. विच टर्म इज 52? ओके, सो दिस इज द लास्ट टर्म. सो use this as Tn. Tn की जगह पे 52 लिखना and we have to find the value of n. Okay, which term is this? So I'll write the formula. So Tn की जगह पे I'll copy 52 because we have to find which term is 52. A is 1 plus
n minus 1. D, difference. What is the difference you can see here? Second term minus first term. 4 minus 1, that is 3. 7 minus 4 is also 3. 10 minus 7 is also 3 because difference is same, common difference. This 1 will come here, minus 1, and I'll open the brackets, 3n minus 3. This minus 3 will come on the left hand side and become plus 3. So 54 equals 3n. 3 will get divided. Your answer will be 54 upon 3. And what is 54 upon 3? It is 18. That means this 52 is which term? This is the 18th term of this sequence. Okay, the first term, second term, third term, fourth term, and so on. This is the 18th term of the sequence. n क्या बताता है? n बताता है कि ये कौन सा term है. Okay, और वही हमें पूछा था. Which term of the AP is 52? Okay, copy this sum. Now, this was the 11th sum. Okay, I will do first the 17th sum now because it is related to this sum. I will do the 17th sum first and then we will continue from 12. So the 17th sum, it is a sum is lengthy. There are 3 parts in this sum. So first they are asking you which term of this series, what is the series 21, 18, 15 is minus 81. They are asking you that this minus 81 is which term of this series. ये कौन सा term है minus 81? Okay, that means we have to find n, correct? And A is 21, first term is 21, and difference, what is the difference? Difference is second term minus the first term. 18 minus 21, that is minus 3. Okay, so difference in this question is minus 3. Don't write the difference as 3. Second term minus first term. See, minus 3, minus 3, minus 3, minus 3. कम होते जा रहा है number. Okay. A is 21, difference is minus 3. We have to find n. So Tn is A plus. In the place of Tn, I have to find minus 81. So minus 81 will come here. 21 plus n minus 1 into minus 3. So minus 81, this 21 will go here. Minus 21 equals, I'll open the brackets. Minus 3 into n is minus 3n. Minus 3 into minus 1 is plus 3. So this will become minus 102 equals, this plus 3 will go here and become minus 3. So minus 105 is minus 3n. Minus minus will get cancelled, 3 will get divided. So n is equals to 35. Okay, we have found that n is equals to 35. That means minus 81 is 35th term of the series. Okay, minus 81 is which term? 35th term of the series. The first part of the question is done. Only the first part now.
The second part is, can any term of this series be 0? They are asking us, can any term be 0? Means they are asking us that 0 इस सीक्वेंस में आता है कि नहीं आता है. ओके, जैसे 15 है, फिर 12 होगा, फिर 9 होगा, ऐसे करते जाएंगे. तो क्या 0 इस सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है? हाउ टू फाइंड दैट? इन क्वेश्चन नंबर 8, 402 वाला जो क्वेश्चन था, करेक्ट, उसमें मैंने बताया था कि चेक करना था 402 टर्म है कि नहीं है. तो हमने क्या किया, 402 को Tn लिया था एंड फाइंड करके देखा n की वैल्यू. वैसे ही वी हैव टू चेक हियर दैट वेदर दिस 0 इज अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. तो क्या करेंगे, अगेन सेम थिंग, इन द प्लेस ऑफ Tn आई विल पुट 0 एंड आई विल चेक विच टर्म इज 0. अगर 0 कोई टर्म है तो पता चल जाएगा कौन सा टर्म है. So a is 21 plus n minus 1 d is minus 3. Okay, so this 21 will go here, 0 minus 21, and I'll open the brackets, minus 3n plus 3 minus 21. This plus 3 will go here and become minus 3. So this is minus 24 is minus 3n. 24 is equals to 3n. 3 will get divided. 24 upon 3 is n. So n is 8. We got a proper value of n. That means 0 is the 8th term of this sequence. Okay. So I will write 0 is the 8th term of this series. Okay, the last part of this question was also asking the same. They were asking that we will write here, yes, 0 is a term. Okay, तो उन्होंने पहले पूछा था कि 0 कोई टर्म है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा टर्म है. तो yes, 0 is the term of this sequence. एंड कौन सा टर्म है 0? 8th टर्म है. अगर ये आंसर पॉइंट में आता, डेसिमल में आता, दैट मीन्स 0 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. ओके, बट डेसिमल में नहीं आया, वी गॉट अ प्रॉपर आंसर. दैट मीन्स 0 इज द term of this sequence. Okay, see 0 आएगा यहाँ पे, 21, 18, 15, then 12, 9, we are reducing it by 3, so 12, then 9, then 6, then 3, and then 0. Sequence में 0 will come. Okay, so we will write, yes, 0 is a term, and which term is 0? 0 is the 8th term of this series. Okay, now the next questions that we have to learn a small new concept for the remaining sums. So that we will do in the next video. Okay, that's it for today. Thank you.